Dhokra, the Adivasi metal craft that survived the test of time for nearly 4,500 years, is predominantly practiced in central and eastern India today and is preserved by the Ojas, a subsect of Rajgons in Telangana. इसको डोकरा यानी दिमाग से तैयार किया गया कारीगरी कला है। दिमागी कला है, कोई इसका कोई लिखा नहीं, जैसे महाभारत रामायण लिखा वैसा कुछ कोई लिखा नहीं, दिमाग से पैदा किया। प्राचीन अति प्राचीन बोलते हैं दो कारीगरी कला मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता है हमारे गुरुजी बोलते थे। बाकी कारीगरी कला पीछे से आए होंगे, लेकिन पहली बार डोकरा और कुमार ये बहुत पहले 5000 वर्ष के आसपास के वक्त पे वो ये ऐसा कुछ प्रयत्न हुआ इसका, और जब से ही ये ढलाई का काम शुरू किया गया। डोकरा यानी ढलाई। We now head into Adilabad and Asifabad, where the ancient art is still kept alive in villages like Jamgaon, Belasariya Rampur, and so on. One can immerse themselves in the vibrant traditions and simplicity these picturesque towns have to offer. So one day during the heat of the campaign, I saw a caravan of pulak carts coming back after performing puja at Jangubai, which is about 50-60 kilometers from here in the thick forest. So at that time I was very curious because they were least bothered about elections. The polling was to have been held just a couple of days later. So I asked them, are they not interested in elections? They said they are not interested in elections, so if it clashes with their traditions. About 20 years back, it was very difficult to access any of the tribal villages. There are still which are difficult to access, but without having any relationship with the outside world, so to say. I mean, it was not very visible. They had a relationship, they had a working relationship. Despite that, such a beautiful culture, came up. सिर्फ आदिवासी ही लेते थे लोग, कोलाम लेता था और गोंड लेता था, बाकी कोई पूछते नहीं थे ये काम को। उनका देव के पास इनका ही वस्तु है, इनके औरत के पास इनका ही, उनका शादी के टाइम पे इसमें जो रिंग रहता वो सिर्फ पूजा ही बनाना, ऐसा एक परंपरा चला। The lost wax casting method begins its journey by warming the wax to soften it. It's then drawn into wires approximately 2 to 3 meters long using the pichakni, a handheld pressing tool. These threads form intricate designs on the sun-dried inner clay structure. The artisans of Adilabad and Asifabad have stuck to their traditional techniques and have chosen not to adulterate them with modern technology. एक गोबर मट्टी का आकार लगता है इसमें। गोबर मट्टी का आकार सूखने के बाद कपड़े में छाने से मट्टी का लय उसके ऊपर आता है, सही आकार में दिशा में वो मट्टी लगाते हैं। वो सूखने के बाद एक कानस से उसको साइज को साफ करके सही दिशा बनाते हैं और मोम के धागे निकालकर, हर तरीका के धागे निकालकर वो मट्टी के आकार के ऊपर हम हाथ से भूनते हैं। भूनने के बाद और पाउडर जैसे मट्टी छाने से उसको डिजाइन के ऊपर और लेपते हैं और उसको 1-2 दिन या 1.5 दिन वातावरण के हिसाब से सूखता है। सूखने के बाद गोबर का मट्टी सब सूखने के बाद धान का भूसा वाला मट्टी और उसके ऊपर और लगाते हैं, वो 1-2 दिन सूखता। पाँच बजे से उठना, घर का काम करना, पकाना, खाना, फिर 5-10 बजे से मट्टी गाड़ना, मोम गाड़ना और मोम सुखाना। मोम सूखे बाद गाभा को हाथ लगाए तो गुंडालना, धागा निकालना।
Brass scraps are heated and broken into smaller pieces to be further melted down. In this process of melting metal in the wood-fired furnace, the artisans face health hazards of different kinds, where molten brass splintering over their bare skin remains a notable concern. जब लावा पिघलता है 1200 टेम्परेचर में, उस लावा आँख में थोड़ा सा दिक्कत बना देता। उसका धुआं या तो उसका रोशनी आँखों को जल्दी ख़राब करता। ऐसे ही डोकरा कारीगर जितने भी दुनिया में होंगे वो सिर्फ आँख के मरीज ही होंगे ज़्यादातर, क्योंकि मुझे अनुभव है इसका, मुझे हो रहा है ऐसे ही। काफ़ी आयु तक कुछ नहीं होता, जब उसका एज 50 से ऊपर होने लगता है तो उसका आँखों का दिक्कत बढ़ते जाता है। The motifs of Dhokra draw their inspiration from nature, religion, and the life around. The most important things, artifacts which they make are the lamps of different kinds. The ones which you see hanging are called jhalkara. These are the bigger lamps of Baladev. Then there are bells of different kinds which you can see here also, different sizes rather. So the smaller ones are hung from the necks of bullocks. But the most important thing remains is the ghungru, that anklet type of thing, which is of different sizes. The most important and revered ones are those which symbolize the Baladev. दिल्ली जाते थे, कभी सुरेश कुंड जाते थे, कभी कलकत्ता, कभी बम्बई, हैदराबाद, सिलपुरम इधर उधर जाके बेचते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, बोले तो पूरा आइटम का मटेरियल के लिए लकड़ी को भी पैसे डालना है, मिट्टी भी पैसे डालना है, और ये मोम भी, ये पीतल के भी पैसे डालना है। ज़्यादा महंगा हो गया। महंगा होने से हम ये काम ज़्यादा कोई ऑर्डर दिए तो भी नहीं बना पा रहे। The setting up of a Dhokra workshop by the Integrated Tribal Development Agency to promote the craft proved to be a ray of hope for the dissolving craft. The establishment of Kala Ashram in 1979 breathed life back into the then dying craft. The man behind this revival was Ravindra Sharma, lovingly known as Guruji for his valuable contributions in travelling to study and preserve crafts of several tribes. He who believed that the seed must be preserved worked relentlessly for the same and revived Dhokra in Adilabad and Asifabad. इनसे सीखो, उनसे सीखो, जो इनका अपना काम था वो उसमें मिक्स हो जाएगा, पता नहीं सब एक हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और आदिलाबाद का जो डोकरा था वो आगे पता नहीं अब कैसे रहेगा, क्योंकि सब दूसरी जगह से लाके ये लोगों को सिखा रहे हैं कि इनसे सीखो। हाँ ठीक है, कुछ टेक्निक सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, जो आसानी से सीख सकते हैं, जिसमें काम में आसानी हो जाए उसको सीखने में दिक्कत नहीं है। लेकिन डिज़ाइनिंग में अगर पूरा फ़र्क आ जाए तो इनका डिज़ाइन अपना ख़त्म हो जाएगा। The media attention on Dhokra art was not to the required extent which it should have got, at least in a place like Adilabad where this art flourishes even now. But whatever help was there was through people who are interested in that and people who are generally do-gooders. As the clinking sounds continue to craft stories, we hope the echoes persist through the sands of time.